પંજાબમાં ખેડૂતો દ્વારા આપ સરકારની સામે બંધનું એલાન. બંધના એલાનને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત. બસ રેલવે સેવા ઠપ થતા લોકો પરેશાન. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ છતાં હોસ્પિટલ ન મોકલાયા ખેડૂત નેતા ડલ્લેવાલ. उत्तर प्रदेश में संभल मामले सपा द्वारा राजनीति. मृतकों परिवारजनों ने 5-5 लाखना चेक आपवा पहुंच्यु सपा सांसदों प्रतिनिधिमंडल. तो बीजी तरफ 9मा दिवसे पण खोदकाम चालू. संभल हिंसा मामले ISIS और पाकिस्तान कनेक्शन की पण तपास शुरू. दिल्ली में गरमायु राजकारण. आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह आरोप और गैरकायदे रहता बांग्लादेशीओ पर भाजपा प्रहार. केजरीवाल द्वारा पुजारीओ और गुरुद्वारा ग्रंथों ने दर महीने मळता वेतन की कराई तपास. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह निधन पर देश में शोकना माहौल वच्चे कांग्रेस नेता राहुल गांधी नवा वर्षनी रजाओ गाळवा पहुंच्या वियतनाम. राहुल गांधी आ बेजवाबदारी पूर्वक वर्तन पर भाजपे उठाव्या सवाल. नवा वर्षनी उजवणी संदर्भे सूरत पुलिसनो कड़क संदेश. उजवणी करता पकड़ाया तो लेवाशे दंडात्मक पगला. साथे ज नवा वर्षनी जाहेर रस्ता पर थूंकनार विरुद्ध पण कराशे कड़क कार्यवाही. सीसीटीवी आधारे फरियाद कराशे दाखल. गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवीनी अध्यक्षतामां योजायेली बेठकमां निर्णय. अमदावादनो सारंगपुर ब्रिज आगामी 2 जान्युआरीथी 1.5 वर्ष माटे रहेशे बंध. नवा ब्रिजनी कामगीरी शरू थता जूनो ब्रिज बंध. शहरीजनों माटे वैकल्पिक रूटनी व्यवस्था. पोलीस कमिश्नरे जाहेरनामું બહાર પાડી આપી માહિતી. 13મી જાન્યુઆરીથી શરૂ થતા મહાકુંભ માટે તંત્ર સજ્જ. 40 કરોડથી વધુ દેશ વિદેશના શ્રદ્ધાળુઓ મહાકુંભનો લેશે લાભ. તો મેળામાં જવા ગુજરાતીઓ માટે પશ્ચિમ રેલવે દોડાવશે 6 સ્પેશિયલ ટ્રેન. ઉધના, વલસાડ, ભાવનગર, સાબરમતી સ્ટેશનથી પ્રયાગરાજ માટે મુકાઈ સ્પેશિયલ ટ્રેન્સ. कारोबारी सप्ताहना प्रथम दिवसे भारतीय शेर बजार में भारे उतार चढ़ाव. सेंसेक्स और निफ्टी रेड झोन में बंद. ऑटो सेक्टर शेर्स तूट्या ज्यारे बैंकिंग शेर्स में तेजी. सोना चांदी भाव में सामान्य वधघट. અને મેલબર્નમાં બોર્ડર ગાવસ્કર ટ્રોફીની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારત 184 રનથી હાર્યું. 5 મેચોની સિરીઝમાં ઓસ્ટ્રેલિયા 2-1થી આગળ. મેલબર્ન ટેસ્ટની બીજી ઇનિંગ્સમાં યશસ્વી જયસ્વાલે એક કેલેન્ડર યરમાં 1400થી વધુ રન બનાવી રચ્યો ઇતિહાસ.